So we are going to continue. So today's class, what we are going to do is, so we are going to see जो हमारे स्टेट साई है ना, एक फॉर्मलिज्म है, उसको कहते हैं ब्रैकेट नोटेशन, विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिराक. ठीक है, तो उसको डिराक नोटेशन भी कहते हैं, या ब्रैकेट नोटेशन, या ब्रैकेट फॉर्मलिज्म ऑफ quantum mechanics, because that will be helpful in lot of simplifying lot of things. So how we write orthonormal states, orthogonal states, how we write inner product between two states side side. So there is a way of writing, alternate way of stating the things in the bracket formalism. ठीक है, तो हम कहेंगे वेक्टर, इसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर स्पेसेस हम कहेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, या ब्रैकेट नोटेशन भी कहेंगे, ब्रैकेट नोटेशन. जो फिजिकल स्टेट है साई, फॉर एग्जांपल फिजिकल स्टेट साई, फिजिकल स्टेट साई is for example fully characterized by the probability amplitude k of psi. ठीक है, relative to the set of observables, relative to the, so observables होंगे ना, एक नहीं बहुत सारे जो भी होंगे, given complete set. अब जो probability amplitude है we are going to take it as components of the state psi. ठीक है, तो एक स्टेट जब हम वहां करते हैं ना Cn psi n, वहां आएगा C1 psi 1, C2 psi 2, C3, तो ये C1 C2, so they themselves can be different components of the state psi. जिस तरह कोई भी आप वेक्टर एडिशन है ना, आप उसकी तमाम कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे ना, देन इट विल गेट एट द एंड कंपोजिशन टोटल, उसका क्या आएगा, नेट रिजल्टेंट. सो जो स्टेट साई है उसके डिफरेंट स्टेट्स है, कंपोनेंट्स. तो साई 1 साई 2, सो कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट वेक्टर हम कैसे लेंगे. तो उसी इक्विवेलेंट नोटेशन में हम फॉर एग्जांपल हम कंपोनेंट नोटेशन को इन टर्म्स ऑफ के आई साई आई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साई आई साई. Psi I is the component vis-a-vis total state psi. ठीक है, got the point. जो psi है ना, जिसका कोई वेक्टर ax cos theta, ay sin theta, but a है ना वेक्टर, so a is the total state. Psi these are I mean value. These are the components of the state vis-a-vis psi, written in terms of bracket notation. And further psi, if you want to write it in terms of k, it will be psi I, ki psi. So psi I, ki psi, psi I. So it's this state. Further अगर हमारे पास ki psi, तो psi will be एक psi अपना components of the state psi. एंड फॉर विच एक हमारे पास ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन है, एक कंडीशन है ऑर्थोगोनैलिटी, है ना. ऑर्थोगोनैलिटी मीन जस्ट कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर, दे विल कंट्रीब्यूट, है ना. cos ऑफ 90 से 0 आता है, cos 0 इज, हाँ, तो वी रिप्रेजेंट बाय दिस डेल्टा आई जी, आई इज इक्वल टू जी, आई नॉट इक्वल टू जी. तो इफ यू वांट फॉर एग्जांपल द ऑर्थोनॉर्मेलिटी रिलेशन शुड बी सेटिस्फाइड, तो k ऑफ psi जो है, सो इट विल बी psi ऑफ psi. दिस इज बेसिकली इसका इनर प्रोडक्ट क्या है, psi ऑफ psi. ठीक है, psi ऑफ psi मीन समटाइम्स इफ psi ये भी I होगा तो ये psi स्क्वायर आएगा, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी इज 1. If I is not equivalent to I, the it will be 0. Yes, that's it. अब इसी चीज को हम इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं. क्या कहते हैं, इनर प्रोडक्ट और नॉन डिफरेंट. अब इस चीज को हम ब्रैकेट नोटेशन में we write it like this. We write the inner product in bracket notation like this. This is one, this is other state. So two states है psi and psi conjugate.
इसका हम लिखते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर, उसका स्टेट, इफ इट्स गोइंग टू फ्लिप द स्टेट इट्स हर्मिशियन कंजुगेट लेते हैं, तो दैट विल गिव इट्स इनर प्रोडक्ट। ठीक है, जिसमें हम लिखते हैं साई स्क्वायर इज बेसिकली साई स्टार, दिस इज स्टेट साई और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, देन ओनली इट विल गिव साई स्क्वायर। अगर साई स्टार भी रियल होता इट विल नॉट गिव साई स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स, रिप्रेजेंट वेव फंक्शन एज कॉम्प्लेक्स वेव। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स वेव का साई कंजुगेट, उसकी जो alternate state, it resides in space psi, it will reside in the space psi star, इसका dual space psi star reside होगा, तो psi star will be psi square, but here we represent those inner states in terms of bracket notation में, ये psi आया है, ये दूसरी, इनका inner product is basically psi conjugate, psi, अगर ये bra यहाँ psi है, cat होगा conjugate of psi, bra होगा psi, तो psi star होगा cat, हाँ साई स्टार अगर कैट होगा साई होगा ब्रा, वाइस वर्सा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग वी आर गोइंग टू सी। तो इसी को हम कहते हैं प्रीफेक्टर, जो है प्रीफेक्टर, साई आई इज नोन एज ब्रा स्पेस एंड विच इज डिनोटेड एज साई ऐसे, एंड जो उसका पोस्ट फैक्टर है, पोस्ट फैक्टर, तो इसका ऐसे आएगा, इट्स नोन एज कैट स्टेट या कैट स्टेट या कैट स्पेस इज अ बेटर वर्ड। ठीक है, सो देयर इज सम फंक्शन इट रिजाइड्स इन सम स्पेस एंड इसका ड्यूअल रिजाइड्स इन द कंजुगेट स्पेस, सो देयर कैन ऑलवेज बी मैप फ्रॉम दिस स्पेस टू, you can go to psi to psi star। ठीक है, कैसे आप उसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन करो तो इट विल बिकम psi star, इट विल बिकम psi, so you can go from normal space to complex space and complex space to normal space by the operation of conjugation। ठीक है, so the same way this is a bra resides in bra space, this is represents in the complex space, है ना, prefactor is the psi। तो अगर ये ऐसे है, सो इफ इट्स लाइक दिस, सो साई साई बी will be equivalent to shabash, so you can also write it as psi a psi b, so if you want to complex conjugate it, so it will be psi की a की जगह आएगा b की जगह आएगा a, but it will get conjugation, but it will not be equivalent to simply psi b psi, है ना, आप कहोगे कि psi b will be equivalent to, no, it's complex conjugate of this, got the point, this is cat's case, this is, अब b को ऐसे चेंज करोगे इट विल नॉट बी लाइक, इट्स बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ दिस स्पेस, तब साइंस दे विल फ्लिप, प्रीफेक्टर विल गो टू पोस्ट फैक्टर एंड पोस्ट फैक्टर विल गो टू, अगर मैट्रिक्स होगा तो इसका वो ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ वो भी हम करेंगे, वंस वी गो फ्रॉम वन बेसिस स्टेट टू अनदर बेसिस स्टेट, वी कम टू दैट एक्सरसाइज व्हाट यू आर सेइंग। तो फिलहाल हम देखेंगे ब्रैकेट नोटेशन में इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, हाउ दे ट्रांसफॉर्म, and then we can relate it with the operators acting on state psi. So that's another exercise if we represent them by matrices. So if it is like this, so Dirac notation इसको कहा इंटरवल, इसको ऐसे कहा, ब्रा को ऐसे कहा, कैट को as for these two vectors, and psi b can be written as a of b, so is equal to, ये इनका inner product of these two spaces. So Dirac represent cat by this, bra by this, you can write it psi b as, and basically it's an inner product between inner product और dot product
इनर प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट में सिंपल है ये, और जो हमारा नंबर है ना ये स्केलर है सिंपली एंड, बट यहाँ पर जो ये है ना ये इनर प्रोडक्ट, यहाँ एक कॉम्प्लेक्स है दूसरा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, वी आर टॉकिंग इनर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, वी आर नॉट टेकिंग रिकोर्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, वी आर टेकिंग दिस फॉर्मलिज्म इन सम कॉम्प्लेक्स स्पेस, दैट्स व्हाई वही डॉट प्रोडक्ट है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द states in the complex space. Yes, this is the difference. So if it is like this, and further if you want to represent this A to B, so it will go to देखो अगर ये दूसरी स्पेस में जाए कॉम्प्लेक्स स्पेस, A will go to like this, देखो ये ब्रा है, it will go to cat, bra hai, it will go to cat. So you can always go from this to, if you go from a normal space bra hai, इस space में cat बनेगा, ये bra है इस space में, so if you go from this space to this space, you can go from this space, this to this and this. You can, they are mutually this thing. In the same way, if you multiply it by some scalar lambda a, lambda a goes to lambda a goes to ये जो स्टेट है ये अपना कैट जाएगा, बट स्केलर में ये है इट विल आल्सो बिकम कॉम्प्लेक्स, तो ये स्टेट जाएगा, ब्रा विल गो टू कैट एंड कैट विल गो टू, बट जो स्केलर है उसका भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आएगा इस स्पेस में, इट्स नॉट, इट मे बी ओनली अ रियल नंबर, फिर कोई परवाह नहीं, बट इन प्रिंसिपल इट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो, so it will go to complex state, ठीक है, so these are this thing. इसको हम कहते हैं, so अगर आपने टेंसेस पढ़े होंगे, something called covariant पढ़ा है, covariant derivative, contravariant derivative. So in the same way you can take analogy of covariance को bra and contravariant को cat. You can have an operation, एक डेरिवेटिव एक तरीके से है डी बाई डी एक्स, उसका डेरिवेटिव इन द अपोजिट स्पेस होगा, सो यू कैन हैव दैट एनालॉजी ऑफ कोवेरिएंट, और में है डिफरेंशियल जनरेटर्स को कहते हैं हम वन फॉर्म टू फॉर्म्स, ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सी, फिलहाल हम वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट कि how we represent in bra cat notation, how we represent state psi. So equation 9.86, 9.80 जो हमने की थी 9.86, if we write, अब हम अपने स्टेट पे आएंगे, psi को हमने रिप्रेजेंट किया था ना in terms of so psi को in terms of k of psi means we are taking components of state with regard to the original state psi, psi जो start when we started, it's k of I psi. So if you write it in the component form, अब इसका originally में हमने कहा था कि जो components of the vector vis-a-vis this state psi क्या है, so अगर इसका ये तो हो गया cat फॉर्म में, अब इसको अगर ब्रा फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा, शाबाश, इट विल बी शाबाश, ये क्या है बनेगा ये ब्रा, तो इट विल बिकम cat, ठीक है, ये psi है, ये इट विल बिकम psi कंप्लीट, और हाँ ठीक है क्या था, और इट विल बी इक्वल टू psi I psi ki psi I, हाँ अगेन यू कैन गो फॉर अगेन कॉम्प्लेक्स कंजुगेटेड, ये psi I आ जाएगा, ये दूसरा ki आ जाएगा, ये ki आ जाएगा, अच्छा अब इसमें एक और चीज है, फॉर एग्जांपल इफ जैसे a और b,
है ना, इनर प्रोडक्ट। तो ए ऑफ ए क्या आएगा, ए स्क्वायर, इट विल बी 1 है ना, जिसका साई स्क्वायर इज इक्वल टू ये साई साई कंजुगेट है ना, इट विल बी 1। दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी इज, so you can now see the same thing like this if you want to translate it in terms of such that b of a जो होगा, if you want to, it will be a of b so the state psi जो है it's normalized to unity if अब state, so we have to, जिस तरह हम कहते हैं ना, हम अक्सर कहते हैं we have to normalize the wave function. Normalize the wave function means हमारे पास psi है and we are going to multiply the psi square such that या कुछ such that the wave जिसका probability at the end it should be equal to 1. तो हमारे पास अगर कोई unnormalized wave function होता है, in quantum mechanics होता है कि we have to find its, we have to normalize such that we can calculate the probability. इससे कंपोनेंट्स निकालते हैं, फोर्सेस के कंपोनेंट्स निकालते हैं ना एट द एंड। यू कैन नॉट से दैट वेव फंक्शन स्टेट साई कहां से गई, इट विल गो एनीवेयर, सो यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स। जो इलेक्ट्रॉन है स्टेट साई, तो इसकी एनर्जी कहां कहां है, क्या है, ठीक है। सो देन दैट्स द वे यू से यू हैव टू नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन। तो इट्स अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, मींस यू आर टू, सो इफ यू वांट टू नॉर्मलाइज द स्टेट साई, the state of the state psi is normalized to unity if psi of psi है ना, इनर प्रोडक्ट ये a of e आएगा है ना, psi square is equal to 1, तभी तो नॉर्मल ये होगी ना नॉर्मलाइज स्टेट। तो बट वी हैव टू राइट psi इन टर्म्स ऑफ these कंपोनेंट स्टेट्स, ठीक है। हाँ सो नॉर्मलाइजेशन आप याद रखो, कोई भी वेव फंक्शन का इट कम्स एट द एंड, इट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी 1 जो आता है साई साई स्टार इज इक्वल टू। तो हमारे पास कोई भी वेव फंक्शन होगा ना, जैसे कोई भी वेव फंक्शन, जैसे साई इज इक्वल टू 8 for 2x 3x कुछ भी है, तो हमको नहीं पता है ना जो वेव है ये कॉम्प्लेक्स वेव है ऐसे, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी वेव, ठीक है। अब ये कहाँ इसका नॉर्मलाइजेशन लाइक करेगा, सही है, उसके नोड्स एंड एंटी नोड्स हमको फाइंड करने पड़ेंगे, या इसका मतलब है कि जहाँ उसका प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ होगा। तो इन वन ऑफ द क्लासेस वी सॉ इट इन टर्म्स ऑफ हर्मिट पॉलिनॉमियल कैसे निकालते हैं हम इनको, ठीक है। मैंने सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन, उसका डिफरेंशियल सॉल्यूशन निकाला, ठीक है। So we are not going to do that exercise. So if it's normalized to unity, then psi to psi को in terms of this लिखेंगे, इसके जो कंपोनेंट्स है। तो एक को पहले psi ये लेंगे, फिर psi ये लेंगे, है ना, psi and इसका और इसका multiply. So it will have this form, and it will go from I to sorry, so it will go from I to चलो J, ठीक है। तो we are going to do this exercise. So it will take this form Ki Kj Ki psi star Kj psi। तो आप इसमें देखो सिमिलर टर्म्स कौन कौन सी है। तो एट द एंड इट विल कम आउट टू बी, देखो के जे है ना, ये सेम आएगा कि ये के जे है ना, इट विल बी 1, ठीक है। सो तो दिस एंड दिस विल कम आउट टू बी 1। तो एट द एंड इट विल कम आउट टू बी सिग्मा आई के आई। तो ये साई आई यहां से ये साई आई है एंड ये साई है, ठीक है। मतलब साई का कंजुगेट है, इसको ऐसे करेंगे तो ये साई आएगा, ठीक है। यू कैन आल्सो इफ यू वांट टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट, साई स्टार में देखो तो साई, तो ये साई साई आएगा, ये साई स्क्वायर आएगा, ठीक है। सो दिस इज लाइक दिस।
So it should come out to be one, which is consistent with our normalization condition. Consistent with our normalization condition of 9.5. 9.5, if you remember, 9.5 हम देखेंगे on the book 9.5. हाँ 9.5 में ये देखो हम 9.5 में भी हमने डिफाइन किया था नॉर्मलाइजेशन में वेक्टर ऐसे की ऑफ साई स्क्वायर is equal to 1. So there also we had normalization. Here we define normalization by bracket notation. ठीक है? So we have introduced some notation of Dirac's draw and cat, and we define states and these components of these states psi in terms of draw and cat. फिर उनका inner product निकाला in terms of bracket formalism. We can come to the same definition of normalization as we have come previously also. ठीक है? अब ये कि while you are switching from one notation to another notation, it's always advantageous. ठीक है? हम जैसे इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में 2-3 अप्रोच है. एक डिराक्स अप्रोच है, एक हाइजेनबर्ग्स अप्रोच है, और एक श्रोडिंगर अप्रोच है, डिफरेंशियल इक्वेशन. So there is some unity to all these approaches. जैसे आप लाल चौक आना है ना, यहाँ से भी आ सकते हो, वहाँ से भी आ सकते हो, यहाँ से इस कॉलेज में आ सकते हो, 2-3 रस्तों से आ सकते हो ना, इस गेट से भी, उस गेट से भी, और कॉलेज में भी पहुंचोगे. Sometimes you choose this road because अब यहाँ से आओगे तो इससे आसानी हो जाएगी. Sometimes you choose that road. Why? Because वहाँ से नजदीक पड़ेगा. So while you are switching from one notation to any notation, it depends upon our problem in hand. ठीक है? So you should be 2-3 notations है ना, how quantum mechanics is expressed. Know all the notations. And जो problem हमारे पास arise होगी, उसके हिसाब से वो notation will switch to that notation. ठीक है? So फिलहाल हमने देखा कि we can also write normalization को हम ऐसे लिखेंगे आसानी तरीके से. हाँ yes. ठीक. Now one thing is that we are again going to see अब हमारे पास जो ब्रॉड डेफिनेशन है in terms of operators, because ultimately हमने दिखाया था linearity conditions. An operator acts on state psi. ठीक है ना, इस तरह कोई we have in quantum mechanics operator formalism. So now an operator, now we have not defined states, we have defined states in terms of bras and cats. So now these operators are going to act on those states. So अगर हमारे पास a linear operator A associates with every cat another cat, such that B of A is equal to A of A. ठीक है? If there is an operator A, so it can associate any operator. So A acting on this will give bra. ठीक है? So you are operating, an operator operating on these states will give us cat. अब इसकी प्रॉपर्टीज है. अब प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जाम्पल इफ एन ऑपरेटर एक्ट्स ऑन टू cats A1 and A2, so as an operator it's going to act like this. Scalar addition is a property. So this operator follows this, or scalar multiplication. If there is a scalar in the prefix, so you can write it as lambda of A operating on this scale. ठीक है? So this is in the same way जो हमारे पास linear operator acting from right to left and backwards. So rules of multiplication क्या है हमारे पास? C1A plus C2. How we can go from left to right? It will be again C1A plus C2A.
और C lambda A will be equivalent to C A lambda. C lambda A. हाँ, these are different properties. अब ये हमारे पास है कि since we are interested in the Hermitian conjugate, because we are Hermitian operators, है ना, are continuously used. एक तो एक normal state हो, उसका Hermitian conjugate होगा. That's it. और Hermitian conjugate को in terms of bracket notation कैसे लेंगे? So for example, state A is there, या Hermitian adjoint operators is the proper way of writing the things. So अगर हमारे पास ऑपरेटर A है, so ऑपरेटर A है हमारे पास Hermitian adjoint ऑपरेटर A इन ब्रैकेट नोटेशन, तो हमारे पास A है, this is operator acting on A, C, so this is also state, this is also state, this is operator. So you can write it in terms of, अगर आप C को यहाँ लाएंगे, A को C यहाँ लाएंगे, it will become shabash, it will become, bra will become cat, cat will become C. जो कंजुगेट होगा, it will become, उसका कंजुगेट it will come A बनेगा. तो A क्या बनेगा? Cat will become bra. ठीक है? So this is it. In the same way, अब हमारे पास, अगर हमारे पास state cat है B, in terms of operator A, will go to, अब इसका reversible हो, this can go to this can go to this shabash, so it will be B will become, अब इसको आप यहाँ लाएंगे shabash, so bra will become cat, ऐसे A will become Hermitian conjugate. ठीक है? So this is it. So and Hermitian, so अगर हम states को, so इसका in terms of notation लिखेंगे, it will be A of B will be equivalent to B of A हो जाएगा A star, ये A हो जाएगा. अब हमने कल किया था, if you had not come, we had something called projection operators. Projection operator हो गया वो operator, वो state से psi को it will come up. Idempotent matrix है ना, सुना है idempotent matrix, square of matrix will come out to 1. जैसे ये matrix है ना 1 0 0 1, इसको आप square करोगे 1 0 0, it will come again 1 0, it will come back to state. तो ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स हमने ऐसे डिफाइन किए थे, so you have a state psi, you are operating them on with some operator, then operator flips it back to its original state psi, psi that PA को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, PA is equal to A of A, है ना, ये माना आएगा ना, ये cat है, ये bra है, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A of A, that will be 1. ठीक है? So this is it. अब ये तो ये states में है, but if you want to write in terms of जो और ये states है, in terms of keys हमने लिखा था, so you can write projection operator as K of I, और in terms of projection operators psi जो होगा, you can write psi in terms of projection operators Ki psi of, so you can have this K को यहाँ लाएंगे, Ki 1, so you can write it as, इसको आप in terms of projection operator लिखेंगे, Pk लिखेंगे, हाँ Pi लिखिए शायद, क्योंकि I is the subscript psi. So you can see, so psi state projection operator psi. So projection operator acting on the state psi, you use the state psi back. Okay, so this is the point. This is another way of saying the same thing.
और कैन से अब इसको आप ये कैट है, अब इसको अगर इन टर्म्स ऑफ ब्रा लिखेंगे तो इट विल बी ये साई ऐसे हो जाएगा, ये के आई बनेगा, ये के आई बनेगा. So again, if it's for psi cat, it will be for psi bra. It's again pi cover. It will be इसका ऐसे बनेगा psi pi. So this is true for cat state psi, bra state. है ना? Here also you come from psi to psi, psi to psi. Via this projection operator operating on the state psi. अब हम करेंगे, we are coming back to our expectation value. At the end हम जो करते हैं normally जो we have to find probabilities of the state psi. इसकी components निकालते हैं, जैसे C1 psi1 C2 plus C2 psi2 plus C3 psi3 C1 psi1 is equal to, अब C1 C2 C3 जो है they are components of the state psi. ठीक है, तो you have to see them through those probabilities. तो हम क्या करेंगे काम, since psi is an arbitrary, it follows that a projection operator pi satisfies closure relation. फिलहाल हम एक और इसमें ऐड करेंगे, प्रोजेक्शन ऑपरेटर will satisfy closure relation. Closure पता है किसको कहते हैं? Closure means what? शाबाश. Closure पता है किसको कहते हैं? Closure means बंद होना है ना, बंद. इसके बाहर कुछ नहीं, it will complete a sort of thing. So it's self-contained. अब इसके बाहर सो प्रोजेक्शन ऑपरेटर की ये अपनी एक प्रॉपर्टी होती है. अब जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, so definition of expectation value K of an observable K in a state psi, if psi is normalized to unity, then K of this is Ki जो अभी हमने इसे पहले किया था, it's normalized, or you can also write it like this, psi of I, तो in terms of cat लिखेंगे, psi is K of I और psi, है ना? K of I ये cat है, sorry ब्रा है. तो समटाइम्स ये किया आएगा ना, ये की आई आएगा, ये साइज स्क्वायर है, किया आएगा, ये साइज आएगा, ये साइज स्क्वायर आएगा, की आई 1 आएगा, तो की आई अपना आएगा. सो यू कैन राइट दिस थिंग आल्सो. यू जस्ट एट माय प्लेस सी, कैन यू राइट दिस आल्सो लाइक दिस. यू कैन सी सिंपली, यहाँ देखो की आई ये क्या है, ये की आई है, इट इज 1. साई और साई है ना, ये साई स्क्वायर इन प्रोडक्ट, तो साई स्क्वायर अपना है, साई स्क्वायर अब एक ही स्टेट का है ना ये, तो यू कैन राइट इट एज के आई साई स्क्वायर. हाँ साई. So अब ये है कि if you can write it like this, you just convince yourself to home, थोड़ा सा इसको exercise करो, can you write like this or not, having bracket notation. So if you write it like this, then Ki are the possible results of measuring K. Possible results of measuring K means different है ना operators or acting to possible results, probability states निकालते हैं.
फिर हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं ना स्टार्ट में कि हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपनी जस्ट एट योर प्लेस अगेन गो एंड सी हाउ वी फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज वो हम इन क्वांटम मैकेनिक्स कैसे निकालते हैं. इट्स बेसिकली मीन ऑफ वेरिएबल्स स्क्वायर ऑफ ऐसे निकालते हैं x square minus square of x mean minus this square of mean. So how we find the expectation value? So for experiment of k, if psi is normalized, k this is this. From the observable k is represented by हर्मिशन ऑपरेटर. ये तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गया. अब बट के इज रिप्रेजेंटेड बाय हर्मिशन ऑपरेटर. के को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे के इज के आई, ये के आई, ये हर्मिशन ऑपरेटर, ये सब हर्मिशन ऑपरेटर. This Hermitian operator is acting on state psi. ये Hermitian operator. So it's acting on state psi. So इस सब को हम represent करेंगे as Hermitian operator. Acting on state psi, which will give us some measurable. And वो measurable एक नहीं होगा, वो measurable होगा बहुत सारे measurables होंगे. फिर उन्हीं को sum करके at the end probability should be 1. And these will basically constitute basically psi, है ना, C1 psi1 plus C2 psi2, C1 C2 है ना, ये एक के लिए इंडिविजुअल मेजरेबल, एक मेजरेबल, दूसरा मेजरेबल, फिर तीसरा, एंड एक का जो हर्मिशन ऑपरेटर होगा ये इन टर्म्स ऑफ दिस कंजुगेट ये आएगा. बट इट इज इन ब्रैकेट नोटेशन. वी हैव डन द सेम थिंग प्रीवियसली आल्सो. एंड where k becomes the expectation value from 9.105 and 9.104. तो k becomes, अब ये कह रहा है k को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. This is one of the fundamental formulas of quantum mechanics. Psi is 1, the k can also be expectation value. So you can go to 9105 and this, you can write it this. अभी I just stop 2 seconds. I'll take. जो आप क्वेश्चन कह रहे थे ना दैट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट देम एज मैट्रिसेस. ठीक है, तो अगर हम साई को वी आर गोइंग टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ so if we are going to write psi. So it's like how you can go for change of basis. Change of basis means जो हमारी identification of operators vis-a-vis these basis states. So we can have जो state psi है उसके inner product psi square. इसको हम identification करेंगे from in terms of matrices. Operators को in terms of we can say they are matrices. But it is not always the case. To make it possible, we have to choose a certain suitable basis by which we can go from one transformation to another transformation. For example, there is a state psi, it's going to operate on some state psi, and वो उस दूसरी state में जाएगा. अब ये state psi to psi prime जाएगा via this operator. ठीक है? So, but again, you have to have an inverse operation. It will come from psi prime to psi back. But जो ऑपरेटर है ना, इट कैन हैव ए मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, अब वो मैट्रिक्स फॉर्म जो ऑपरेटर है ना, समटाइम्स दे कैन बी सेम, बट इट इज नॉट ऑलवेज दैट ऑपरेटर्स का फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म में ही होगा. अब ये है कि वी हैव टू चूज सुटेबल बेसिस सो दैट वी कैन हैव अ जनरल ट्रांसफॉर्मेशन टू गो फ्रॉम स्टेट साई टू साई प्राइम वाया देन ऑपरेशन. अब वो suitable basis कैसे हम चूज करते हैं. ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन. दिस है सो इन नटशेल इफ psi k अगर हम शॉर्ट में कहेंगे psi k इज रिप्रेजेंटेड एज psi I si k
SI मीन्स कोई मैट्रिक्स है S, है ना, ये S11, S12, so on, S1n, S21, S22, 2n, so on है ना। अब देखो ये इफ इट्स मैट्रिसेस है ना, ये I will just contract, it will be psi of K. So you are translated psi K को in terms of psi I आपने लिखा by this multiplication by this matrix, है ना। आप इसको ये कंट्रैक्ट हो जाएगा, इट विल बी psi K back. So you express an element with some another element via दो एलिमेंट्स के दरमियान आपने ये इसी एलिमेंट को आपने I के थ्रू एक्सप्रेस किया, बट मल्टीप्लाइंग सम मैट्रिक्स. But if you multiply it by that, you will get psi K is equal to psi K. So in this way, अगर हमारे पास two basis states हैं of the same order, psi A going to AI psi I goes to AK psi K bar, such that AI is K SIK AK bar, है ना। अब हमारे पास एक और एलिमेंट है, ये AI है, ये AK बार, तो इस SIK है ना, ये K विल अगेन वो कंट्रैक्ट, ये AI ही बाहर वापस आएगा। अब जो हमारे पास हाउ कैन रिलेट AI विद दिस, इसको हम कैसे इसके साथ रिलेट करेंगे? सो हम ऐसे करेंगे A1, सो इसको भी हम अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे A1 A2 AN, and this is this matrix S, this is A1 prime A2 prime so on, so you are writing A1 को in terms of A1 but mediated by this matrix. जैसे इसको पहला वाला एलिमेंट है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दिस एलिमेंट इसके साथ, ठीक है, देन इट विल कम A1 is related to this, A2 is related to but via the through S, so this. और अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, if you want to write A1 in terms of this, you can write A1 bar A2 bar AN bar, इसका S है, S इनवर्स, ठीक है। अब ये है, so if you want to write them in terms of state psi, so I'll stop 2 steps more. So if you want to write this operator A acting on psi of J is I psi of A of ij, it's equal to I k psi k s k I A I j. देखो ये मैट्रिक्स है ना, S K I which will contract, K will contract, तो at the end it will be AJ. So operator A acting on psi, but psi J को हमने लिखा है in terms of psi, but we have mediated it through some matrix AIJ, जिसके दो indices हैं A1 2, है ना, 1 1 1 2 1 3. You can have as many indices as you can. If you have 2 components, so you can have 2 indices. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और A psi J bar, एक तो ये है इसका complex conjugate, we can write it as psi L SL J sigma L sigma J psi K A K L such that SA bar is equal to AS, or you can write A bar is equal to S inverse A of S. तो इसी को हम कहते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन. So basically ये है कि how we can write this operator acting on state, how we can write it in terms of 2 component matrix का multiply करके on the state side, so that you can always go from this to this. अब ये इसका conjugate, you can go from this to this. So at the end this is equal to this, or this is equal to S inverse. इसी को हम कहते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन. How we can change the basis states and express one state which is being operating upon by some operator
vis-a-vis the alternate state acting upon by those operators. ठीक है? And those operators can sometimes be represented by matrices having two components. ठीक है? So we stop.